होने का लुक स्ट्रेट यार यहाँ पे देखिए एक्सक्यूज मी मैम ऑन योर प्लीज योर लेफ्ट मैम यहाँ योर मैम यहाँ सेंटर मैम Manoj straight. Yeah. Excuse me. Ma'am, यहाँ नहीं लगा. Straight. Look straight, man. थैंक यू One. left Excuse me. Left. आगे से थोड़ा मुझे ऐसे कम करना पड़ेगा. मेरा फेवरेट. Excuse me. मैम ऑन योर Yeah. Look straight. चांगली तर घ्या दिला आपण अटॅच करून टाका. मेरा मैच कोई देगा पीछे से. लेकिन अभी तो गोवा थे और गोवा थी देखना नहीं समझ मैम यार मैम हो यार अरे जाएंगे Urvashi. Back to back. Yeah. I'm just go here. Excuse me. कनिका जी आपका यहाँ पे कनिका जी मैम ऑन योर प्लीज मैम यहाँ look straight. Sir, right side. मैम यहाँ. हाँ क्या हुआ कौन ये भी लगे तो सुंदर है यार Excuse me. मैम ऑन योर प्लीज One here. Yeah. आगे लवकर पुढे. ये वायर लगा केबल लगा हेडफोन देना तुम नहीं देगी क्या तुम नहीं है दूसरा चढ़ा सोना वहाँ पर गई还10%不到了。想火力大手。
राधिका बोलছে দিয়ে तो मैं भी नहीं मालूम Ma'am, here. Yeah, to your left. Here, right. So, here, right. Ma'am, here, right. Yeah, left, left. Come on, back to the car. Hi.
तो ना यहाँ पे Hi, good evening. Oh, your foot. Well, I'm here to attend the Grazia's Young Fashion Awards, and the name says it all, right? We're going to be celebrating youth icons this evening. Oh my gosh, I don't know who I'm wearing. Shit, you know what? I don't know who I'm wearing. Who? Rinzin Dadu. Rinzin Dadu, that's who I'm wearing. Well, yeah, okay, sorry.
I'm wearing Atsu. नहीं, आई थिंक मैरिज की अहमियत घटेगी ऐसा नहीं है, पर लिव इन रिलेशनशिप्स की अहमियत बढ़ जाएगी। हाँ, क्यों नहीं। अगर हम अरेंज मैरिज कर सकते हैं, अपने बच्चों को स्ट्रेंजर्स से शादी करने के लिए फोर्स कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अपनी चॉइस के पार्टनर के साथ अगर कोई दो कंसेंशुअल अडल्ट्स रहना चाहें तो उसमें एक बुरी बात क्या है। ओह अच्छा, मैं यहाँ पे बताऊँ। थैंक यू। I'll get mine later. Let me just... Oi, Sam, how are you? अरे भाई कितनी बार बोलूं यार भाई how are you? Hi, how are you guys? Okay, let's see. Oh crap, yeah, we should take a photo of me so I can tweet. Hi! I'm wearing Gaurav Gupta and I'm wearing jewelry by Nirav Modi. No, I'm going to talk to you. It's easier. Sorry. Yeah, come over there. No, stand up so I can see you. Huh? Of the Grazia Awards? Well, the Grazia Awards is actually one of the funnest awards, I think, because they start late and it's more like a party. So I always look forward to coming to them. Last year I won an award. I can't remember what I won for, but I think it was Showstopper of the Year or something. I can't remember. This year I'm not winning. I'm just giving an award to somebody else. And for me, the highlight is seeing Ekta and Marinaz because they're my friends and I like working with them. I shot with them last week in Hong Kong. So I did a deal with Ekta where if I come for the awards, then I get to pick what cover I want. Look, I can't answer that question straight off the top of my head because I think it's
I know it's a bit of a political question. I do believe in the institution of marriage, but I think it's a personal choice. I think if you're living with someone, then I mean that's a commitment in itself, isn't it? In a way. Thank you. I want to get a drink. Thank you. Good evening. I'm wearing Hema Kaul, and it's really nice because I believe she's going to be here this evening. Any secret that you would love to reveal from the things that are going to happen inside? Secret? Well, it's a secret, so how can I reveal it? No. Would you just Meg? No, I think you have to go inside to take a look. It's much nicer when you don't reveal secrets. See, I think in today's day and age, people are growing and we have to evolve with the way that things are going. You cannot be so stuck. Marriage is a marriage of the mind. So if two people have been living together for many years, they are somewhere in their minds already married. So it's not a piece of paper that tells you you're married. It's in your heart and in your head that tells you you're married. And I think it's amazing if the Supreme Court is going to be progressive enough to recognize these relationships. I think yes, democracy is about growing and being progressive. Okay, it's just a fun question. Anyone in Bollywood or Hollywood who you desire to have a living relationship? Oh my God, Wolverine, Hugh Jackman. That is because you are a huge fan. I'm a huge fan, yes. You'll ask me, okay. Hi. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई थिंक कि ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. यू नो नाउडेज जो पहले नॉर्मल फिल्म्स के लिए अवार्ड्स होते थे, आजकल फैशन के लिए भी हो रहे हैं. आई थिंक दैट्स वेरी एक्साइटिंग एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ आज. एक्चुअली आई एम वेयरिंग दिस वेरी, आप देख नहीं सकते लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस एंड इट्स बाय नेहा अग्रवाल. उनके स्प्रिंग समर कलेक्शन से है. सो या आई थिंक इट्स लुकिंग रियली नाइस.
सॉरी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने रूल पास किया कि जो भी लिव इन कपल्स है ना वो मैरिड कपल कंसिडर किया जाएगा. डू यू थिंक कि जो मैरिज की वैल्यू है हमारे देश में वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी? I think कि marriage is a very sacred entity and I feel कि whenever anyone decides, जब दो लोग decide करते हैं कि उन्हें शादी करनी है, it's a very sacred bond. So I feel that you can't just play around with that and you can't just say that okay now you know आप साथ रह रहे हो तो आपकी शादी हो गई. But I think marriage needs much more. It's a very pure form. So I think that there's much more that is, you know, other than living with each other, there's much more that marriage needs. So yeah. So do you agree with this rule that has come out? I think that couples that live together, I don't think that they are considered to be married, not according to me. Okay, one last. If given a chance, who will be that Bollywood actor or Hollywood actor who you would love to be in a live-in relationship? Hi. Parents ये देख रहे हैं तो I don't know. I think it doesn't make a difference if it's Bollywood or Hollywood, but if I could meet someone, it would be Ryan Gosling. Love him. बॉलीवुड से याद आई, ये मैडम बोल रही थी कि आप डकोटा जॉनसन की तरह लगती हैं। ओह सच में? ठीक है, यहाँ भी एक 50 शेड्स कर लिए फिर. I may be doing, but cannot talk. Can't talk right now. Can't talk about them. That's what he just asked me. I said I can't. I'm not allowed to speak. Sorry. Thank you. नहीं, एक्चुअली आपने बुलाया था इसलिए आई हूँ. अंदर माहौल एक्चुअली वार्म अप हो रहा है. एवरीबडी इज गेटिंग डाउन टू हैविंग अ गुड टाइम. Everybody has a glass in their hands and there's a lot of chitter chatter. There's a good buzz. So I think the warm up बहुत अच्छा चल रहा है and I think it's going to be a great show. This is not a red rose. You'll have to ask Archana Rao what it is, but it's more like taken from menswear, where they put in a handkerchief in their pocket. So it's taken from that, yeah. Yeah. Supreme Court recently has passed a rule that the live-in relation couples will be considered as married couples after a certain period that they live in live-in relation. So do you think that in our country the value of marriage will go down because of the rule that has come out? I think we just sort of have made a really big deal about marriage because it's very important, so to say, between two people to, in their hearts and in their minds, really commit to each other. As true as it is that marriage is an institution, I think it really begins from your own heart and your commitment towards one another. So putting a stamp on it or just living in together and feeling like married and fulfilling all your responsibilities as a couple towards maybe both families, all extended relationships, I think that's what matters most. Yeah, I don't think one can label things and then have more meaning to them, and if you don't label them, I think it's of no value. So I think that answers your question. Yeah, I know, but people out here idealize you guys as their idol. So, and this trend has also come from Bollywood. There are many Bollywood actors who in past have had a live-in relation and who are married or who are not together. Correct. Do you think it's because of them that this rule has come out and it's now in trend, as we can say? I don't think something like this can be in trend.
I think it's most important to first be comfortable with the whole idea of two people. For example, if me and my partner hypothetically were to do this and were to live in, I don't think I'm trying to set in an example. In fact, if there is an example that I am setting, it is also to say that yes, I want to know the person more before I make such a big decision of my life, because as an institution, socially, in the culture that we sort of have, you know, grown up living in, it's very important to keep the sanctity of the term and of the label or of the institution marriage. So if some people want to take time before getting into that and making that commitment more social and more public, I think it's absolutely fair. And I personally, I think I would encourage people to spend more time in getting to know them rather than in a more of a hasty sort of a decision and rush into, you know, meeting somebody, dating somebody and feeling it to be, you know, the most perfect match and getting into marriage and jumping into it. I think so the sanctity of a marriage remains protected, according to me, because I've had a live-in myself, you know, in the past, and that's when I decided that I never would ever again have a live-in. But I think with time you change, and with time you grow, and as maturity sort of sets in and dwells into you, you understand that you know, socially putting pressure on yourself that this is what Bollywood actors are doing, and this is I'm saying for the youth of today, this is what Bollywood actors are doing, so I should be doing this. No, I think it's very important to look at what icons are doing in the right perspective. So, yeah. But do you support this kind of rule that has come up? Do you think it's right on the government's part to come up with this rule? I think it's fair. I won't think that it's unfair and unjust, because, you know, beyond a point, after so many years of living in, I'm sure two people feel committed and married to each other anyway in their hearts. And I think to really structurize that and say, okay, you know what, let's say you're living in, I'm sorry, but I'm not aware of the number of, you know, the time frame that they've set in, more than 2 years. So I think it's fair to sort of structurize it and say that since you have been living in for 2 years, if you choose to, I think very well go ahead with it, and we would declare you married in the eyes of the law. I think it's fair. I would again say that if you look at this in the right perspective, I would say that it still sort of secures and safeguards the sanctity of marriage, because two people have been living together, right, for 2 years. I'm all for a live-in, by the way. Okay, one last question. Yeah. If given a chance, which Bollywood actor or Hollywood actor would you love to be in a live-in relationship? I would not want to be in a relationship with somebody from Bollywood or Hollywood or an actor in the first place. Any particular reason you don't want someone to be out of the field? You know, our world of films is really limited. It seizes the growth of people, because there's only one way that we look at life. For most of us, I think work is films and films is life. While I've just begun to come to this realization that work is not life and life is not films. There are various areas of life, and to have a really joyful, fulfilling life, it's very important to focus on all areas equally and give it equal amount of importance. So, yeah. Thank you. Mic check, hello. Mic check, mic check, mic check. Mic check, hello, hello, mic check, 1 2 3, mic check, mic check, mic check. Are we late? Are we early? बहुत excited हूँ. Grazia is a very special magazine, and we're all coming together to celebrate the best in fashion. It's always good to be here.
ये कुछ डिफरेंट है। हाँ, ये बहुत ही स्पेशल आउटफिट है, निखिल थम्पी का है और वो हमेशा कुछ एजी करते हैं। आई थिंक दिस 3D metallic thing is looking quite cool and edgy, so it's all Nikhil Thampi. जी, कोई particular reason? Lot of healthy food, workout and taking care of yourself. Let's talk about the event, no? Okay, tell me, After 2 years. So do you think in our country the value of marriage thing will go down because of this that has come? So can I give you my own answer for it? My answer is give love a chance. पांच और फिल्में करनी चाहिए, है ना? हाँ. अलग अलग किस्म की फिल्में, कॉमेडी कर ले, एक्शन फिल्म कर लेते हैं। Exactly. Very excited actually because it's my first time on Grazia Style Awards and it's their seventh. We finished seven years and they were going a bit retro, so I thought we'll rest like that. But yeah, very super excited actually. I'm also very excited. Basically, I'm a fashion designer by education. So जब भी मौका मिलता है to be a part of anything to do with fashion, it's very nostalgic for me. So it's great. Urvashi Juneja. I'm wearing my father. Pants are my father's. Okay, one question. Not on the event. Supreme Court has recently passed a ruling saying that the live-in relation couples will be considered as married couples after 2 years. So do you think that in a country like India, where marriage is given such importance, somewhere down the line the importance of marriage will go down because of the I don't think it will go down, but I'm very happy that they are considering live-in relationships as important as marriage in a way, because it exists abroad everywhere, not everywhere, but lots of countries. So I'm very glad that they're doing that. But I don't see that the importance of marriage will go down because large population in the country will still get married. Yeah, but I think it's the interpretation also, no? If they would say that by default two people who are living together will be considered as married, so then it's a bit... Yeah, I it's a double-edged sword. Yeah, but... married, it's like the Bollywood or Hollywood actors and live-in My husband. He's also from Bollywood. Oh yeah. Oh, like that. Yeah. Like that. Live-in relationship with somebody. Let me see. Claire Danes. I think I'll have it with Kate Blanchett. Have you seen Homeland? That from Homeland, yeah. Claire Danes. Her name is Claire Danes. Claire Danes. I'd like a living relationship with her. Kate Blanchett. Though she's a woman, I'm the biggest fan. Oh, bravo. I'm like. It's okay, nobody. Cut. To like drop things. Anyway, thank you. I think. मैं तो हूँ यार स्टाइलिश में, क्या है ना, घर पे भी मैं बहुत स्टाइलिश हूँ। मैं सोने के लिए जाता हूँ तो बहुत स्टाइलिश कपड़े पहन के सोता हूँ। कभी कभी मैं टक्सीडो पहन के सो जाता हूँ।
ये आप लोग आओ, कैमरा क्रू लेके आओ, सोते हुए देखो मुझे बहुत स्टाइलिश सोता हूँ। मैं बुला रहा हूँ ना यार। I think नहीं यार, अभी before Badlapur I haven't done a lot of promotions or sort of not really been to a lot of such events. So I think that's all, and you just see me more now only because my film's out. Go on the Save the Internet. I think the site is Save the Internet, and you have to vote. I think that's. I think. See, that's not the thing. It's like internet is so handy today that any person sitting anywhere in the world can do what he wants and upload what he wants and comment on what he wants or she wants. So I think you can't do much about it. I mean, whether that happens or not, I don't think you can do much about it, and there's no point in indulging into that alone. Sorry. Okay. Thank you. Cheers. Yeah. Just one minute. Yeah, let's get Hang on. हाँ मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं है। नहीं, अनिल चाचू के घर के बारे में मैं घर पे खाना खाने आया हूँ, लोग पूछेंगे ट्रेलर कैसा लगा, वो तो ट्विटर पे आप सबको पता लग ही जाता है कैसा लगा। कब फिल्म फेयर पे मैं अंदर था, होस्टिंग कर रहा था, आप लोग उल्टे साइड थे, तो मैं कभी बाहर आया नहीं रेड कार्पेट पे। मैं उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोल भी रहा था। और कब था? जीमा के दिन पे भी मैं ऑलरेडी पीछे पहुंच चुका था। और कौन सा इवेंट? जी बिल्कुल है। ठीक है, तो बताइए क्या हो रहा है? आप अंदर से ही आ रहे हैं, क्या हो रहा है? मैं अंदर तैयार होके आ रहा हूँ। इस वक्त तो पूरी तरह अंदर जा नहीं पाया, मैं सीधा तैयार होके आप सबसे मिलने आया हूँ। बहुत अच्छी रात होने वाली है, फैशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है अपने अंदाज में। Grazia has decided to have a celebration of all the young upcoming designers as well as all the established names. और फैशन और फिल्म इंडस्ट्री का तालमेल हमेशा रहा है, तो आज एक और अनोखी रात होगी और मज़ा आएगा। बाकी डिटेल्स आपको पता लग ही जाएंगे। जी सर। नहीं यार, गर्मी ज़्यादा हो गई। क्या आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत गर्मी हो गई थी, बाल लंबे हो गए थे, तो मैंने सोचा काट लेता हूँ। अब थोड़ा आराम है, पसीना कम आता है बस। यार हर चीज़ के लिए टिप्स नहीं मिलते ना। बाल जैसे काटने का मन किया, काट दिया। आलिम भाई, हाकिम आलिम जो सब जानते, बहुत मशहूर है, हम सब के बाल काटते हैं, तो ही थॉट वी शुड एक्सपेरिमेंट। तो आजकल शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा मस्ती करते थोड़ी बाल के साथ बस। जी पूछिए, इसके पहले मैं गर्मी में पिघल ना चाहूँ, जल्दी से पूछिए। जी हाँ यार, अभी तक मेरे से ज़्यादा आप लोग मेरे बारे में सुनते हो, तो मैं क्या कहूँ। जब सही समय होगा तो सही लोग उसके बारे में बातचीत कर लेंगे। Okay. Okay, I have not been in the city for the last 10 days. मैं छुट्टी पे था, तो I'm not aware of this rule. If it came out before that also, मैंने Twitter या Facebook कहीं पे भी पढ़ा नहीं है, तो it would be wrong on my part to speak about it. सर इनको सेंटर में खड़ा कीजिए ना, मैं आराम से सेंटर में लोग दे दूँगा। यार मैं वही कह रहा हूँ, I don't know the details of it, so I don't know at what level they've spoken about it. So it would be very stupid of me to just talk without knowing information. इसी तरह unnecessary controversies बनती हैं, तो I'll avoid it. Done? See you guys.
Yeah, it's gonna be a very glamorous evening. I'm sorry, sleeping. Yeah, I'm excited because it's gonna be an extremely glamorous evening. So I'll get to see a lot of good-looking people, and yeah, it should be fun. Little champs, the सबसे little, yeah, probably height-wise and probably age-wise maybe, but it was a very wonderful experience. My first ever experience as a national reality show judge. So it was fun, and yeah. I hope, and of course you will see me in films. I have loved the experience as an actor in front of the camera. In fact, we are developing something really interesting. कुछ नहीं बोल सकती, बोलना चाहती हूँ because I would like to say it when everything properly shapes up and with a bang. I hope so. But yes, I will definitely continue singing. I am a musician. I am an artist. I cannot stop for what drives me for my life. So yes, of course, you're going to see me in all of these forms, hopefully. मैंगो फिल्म के बारे में मुझे कोई बताए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी because I had been waiting for the film to release. I don't know, you know, there are a lot of things that happens in the industry. Everybody doesn't know about it. I have been an actor. I've been hired as an actor. I've acted. I'm now hoping and praying that the movie releases fine and nicely. आप लोगों okay. I cannot say anything right now, but yes, I'm trying to shape up something. But Raju sir is an extremely dear person in my life, and I'm really blessed that I have his guidance, I think. But nothing more than that I can say. Okay, come. Thank you. I can't move. Today I'm wearing Armani, and I thought I'd go with something very classic. So yeah, trying to have like a very nice red carpet moment right now. It's a very exclusive designer. I'm very excited because Grazia is one of my favorite magazines, and I've graced their cover many times. So it's something that is, you know, I mean, like I love being at these awards to support them, encourage them. Sorry to interrupt you. I'm like popping all over the place. Okay, yes. Grazia? Okay, Grazia, amazing magazine. Been on their cover a few times, and a fantastic team to work with. I mean, a great magazine for girls. So today is a great night where we're celebrating fashion and design and, you know, glamour. So I have to be there and support. Oh, I'm nothing on politics. Please. सवाल तो सुनने दो आप। अरे यार सवाल तो सुनने दो।
परत आहे. Hello guys. एक तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी रेस दौड़ के आई हूँ, इतनी गर्मी है और मैंने एक ड्रेस पहन रखा है. ऑफ कोर्स पहले अपसेट थी, लेकिन मैं सो रही थी और जब मैं सुबह उठी तो पता चला कि पोस्टर लीक हुआ है और डेफिनेटली काफ़ी अपसेट थी दिन में. लेकिन जैसे शाम होती गई रिस्पांस बढ़ता गया तो सबका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है टुवर्ड्स द पोस्टर ऑफ द फिल्म. सो अभी it feels really good. बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है टुवर्ड्स द पोस्टर ऑफ द फिल्म. सो आई होप दैट ये इफ़ेक्ट रहे और कोई मतलब लीक और कोई मटेरियल लीक ना हो. दैट्स ऑल. नहीं, एक्चुअली आज एकता रजानी ने मुझे स्टाइल किया है. सो आई लव व्हाट शी इज़ गिवन मी. उन्होंने मुझे सब्यसाची का एक ड्रेस दिया है. सो वेरी वेरी हैप्पी टू बी स्टाइल्ड बाय हर. अभी इवेंट में जाने वाली हूँ. एक रॉक कॉन्सर्ट जैसा माहौल था अंदर, तो अभी आई थिंक वो ख़त्म हो गया. देन वील गो इनसाइड. या नहीं, आप यहाँ पे मैं गाना नहीं गाने वाली हूँ. अनलेस समबडी आस्क्स मी देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू सिंग फॉर देम. या और रॉक ऑन टू की शूटिंग शुरू होगी अगस्त में. गाने किस तरह के होंगे रॉक ऑन जो आप गाने वाली हैं? थोड़ा तो मतलब बाद में के लिए सस्पेंस ही हटाना है यहाँ पे. ये भी आज मेरा पोस्टर कल लीक हुआ है, आज ऑफिशियल मैंने और वरुण ने ट्वीट किया है. तो आप लोगों को कैसे लगा पोस्टर? देखा है कि नहीं देखा है? पोस्टर देखा है किसी ने? अच्छा लगा? ओके, चलो गुड. देयर वी गो. दैट्स ऑसम. दैट्स गुड. वरुण बचपन से तो मेरा दोस्त है, लेकिन इस फिल्म में उसके साथ काम करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि वो उसमें इतनी एनर्जी है और वो इतना मतलब फोकस्ड है अपने काम के साथ. सो इट्स रियली रियली नाइस. लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड. मैं कोशिश कर रही हूँ. आई थिंक मोस्टली जा पाऊँगी शिलोंग. रॉक ऑन टू के प्रेपरेशन के लिए मैं टीम के साथ जाने वाली हूँ मोस्टली. सुना है बहुत सुंदर जगह है और ज़्यादा एक्सप्लोर हिंदी सिनेमा में एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो रॉक ऑन में हम करने वाले हैं. तो आई थिंक दैट्स रियली गुड. Really? See, I have not heard this. मैं एक्चुअली काफ़ी डिस्कनेक्टेड हूँ विथ व्हाट हैज़ बिन गोइंग ऑन. मैं मेरी फेवरेट आ गई है प्रियंका. तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मैरिज की वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी? मैं एक्चुअली इस पर कमेंट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है. लेकिन आई थिंक दैट मैरिज इज़ अ लवली इंस्टीट्यूशन एंड आई टोटली बिलीव इन इट. थैंक यू. अगर आपको चांस दिया जाए किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड एक्टर के साथ लिव इन में रहने का, तो वो अरे बाप रे, ये तो पहले रिलेशनशिप होने दो फिर लिव इन की बात कर सकेंगे. बट या आई थिंक दैट मैरिज इज़ अ वेरी गुड ग्रेट इंस्टीट्यूशन. आई बिलीव इन इट एंड आई बिलीव इन लिव इन लेट लिव. जो जिसको करना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप हो या नहीं हो, दैट्स एन इंडिविजुअल चॉइस. सो या Hello everyone. क्या पहना मैंने? मैं हमेशा भूल जाती हूँ.
हमेशा भूल जाती हूँ ना, मेरी आदत नहीं रहती। वेट वेट Ashley Couture. I'm wearing Ashley Couture. मैं कभी याद नहीं रखती what I'm wearing usually, क्योंकि मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं and then I just say whichever one I like. But today I'm wearing Ashley Couture. वो तो ट्रेलर लॉन्च था प्रेस के लिए एंड हमने पहली बार दुनिया को ट्रेलर दिखाया है एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत डिफरेंट लुकिंग फिल्म है और डिफरेंट लुक राइट नाउ बिकॉज ये ग्रासिया यंग फैशन अवार्ड्स हैं तो फैशनेबल तो बनना ही था। आई एम हैप्पी, यू नो जो फैशन अवार्ड्स होते हैं वो हमेशा फ़न होते हैं एंड जब आपको मिल रहा होता है वो और भी फ़न हो जाता है। सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि अगर प्रियंका चोपड़ा इसे बार-बार आउट ऑफ इंडिया जाया करेंगी तो ठीक ऐसा नहीं कि हम इंडियन को भूल जाएंगी और वहीं की रह जाएंगी, होकर रह जाएंगी, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लोग तो बहुत बातें करते हैं, उन पे ध्यान देना मैंने कब से छोड़ दिया था। बातें करना उनका काम है, काम करना मेरा काम है। मैंने हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जब भी आप अपना मन ठान लें तो आप हर चीज़ एक साथ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़े दूसरे के लिए, और ये एक आई थिंक इंडियन औरत की सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत है। हम घर भी संभाल लेते हैं, काम भी संभाल लेते हैं, तो उसी तरह मैं इंडिया भी संभाल लेती हूँ और बाकी जहाँ पे भी मेरा काम जाएगा उसको भी संभाल लूँगी। आई थिंक ये एक बहुत इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट है। आजकल आप देख भी लें तो मतलब बहुत मुश्किल होता है मैरिजेस को इतना लंबा सस्टेन करना जितना पहले होते थे मैरिजेस। तो आई थिंक ये एक हर इंडिविजुअल के लिए डिसाइड करने की बात है कि अगर पूरी दुनिया में होता है कि इफ़ यू स्टे विद समबडी बियॉन्ड 6 months या 8 months इट्स यू आर कंसिडर्ड यू टू हैव लीगल राइट्स। तो आई थिंक ये इंडिविजुअल सी बात है एंड जो लोग एक साथ रहते हैं और शायद शादी में ना बिलीव करें, आई थिंक हर इंसान के लिए राइट्स होने चाहिए। और हम एज अ कंट्री बहुत डिक्टेट करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, ये करो, ये मत करो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आई थिंक लोगों को छोड़ देना चाहिए। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी की तरह बिहेव नहीं करते आजकल। सो यू नो लेट्स जस्ट लेट पीपल बी एंड लेट पीपल लिव देयर लाइव्स विदाउट जजिंग। हम अपने ऊपर ध्यान दो। आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। मधुर और मैंने डिसाइड किया कि मैडम जी में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी काफ़ी वक्त से। हम लोग बहुत परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे थे, सो फाइनली वी डिसाइडेड टू पुट इट ऑन होल्ड। अभी उसके बारे में मैं नहीं सोच रही, मधुर कुछ और कर रहे हैं। मैं बाजीराव ख़त्म कर रही हूँ, दिल धड़कने तो रिलीज़ करूँगी, गंगाजल ख़त्म करूँगी और उसके साथ क्वांटिको कर रही हूँ। तो वी जस्ट डिसाइडेड कि अभी थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट देते हैं एंड देन वील सी इन द मीनवाइल ही इज़ डूइंग अनदर फिल्म एंड मैं अपनी प्रोडक्शन में I'm developing about 3-4 films which may or may not star me. वही तो देखा। Thank you. बहुत जल्दी।